Hello students and welcome to Sathi IAS. In our ongoing mapping series, we have come up with the next video. That is the video on the Biosphere Reserves of India. Now, Biosphere Reserves of India are only 18 in number. On the other hand, the national parks are more than 100, as well as wildlife sanctuaries are more than 600. So that's why national parks और wildlife sanctuaries आप सारी याद नहीं कर सकते हो. उसके लिए करंट अफेयर्स पे आप ध्यान रखना. जो भी लोकेशन करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा न्यूज में है फॉर सम और द अदर रीजन, उस पे फोकस करना. ओके वो सारे मत पढ़ना, otherwise it will be an information overload. Focus on those things which can fetch you a lot of marks. नेशनल पार्क सारे रट लिए तो एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का. इन्वेस्ट दैट टाइम इन समथिंग एल्स. Spread that time across the entire mapping series. Okay, so for biosphere reserves, because there are only 18 biosphere reserves and multiple times questions have been asked regarding biosphere reserves के अंदर कौन-कौन से protected areas हैं, that's why we are covering biosphere reserves only. We won't be covering the national parks as well as the wildlife sanctuaries. For that, focus on current affairs. Fine, चलिए. बायोस्फीयर रिजर्व्स की अगर हम बात करें, इंडिया हैज 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स. द कंसेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, इट केम फ्रॉम यूनेस्को. यूनेस्को हैड अ प्रोग्राम मैन एंड बायोस्फीयर, MAB, under which biosphere reserves, they were considered to be regions with very different flora and fauna that needs to be protected, but that also needs to be researched. So यहाँ पे एजुकेशनल पर्पस या फिर रिसर्च पर्पस के लिए लोगों की एंट्री बिल्कुल अलाउड है इन बायोस्फीयर रिजर्व्स. सो बायोस्फीयर रिजर्व्स आर बेसिकली ट्राइंग टू प्रमोट द आइडिया दैट protecting the environment and human interaction, they can exist side by side. ये दोनों चीजें साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं. Humans, they can get entertained and can get educational information from these protected areas while ensuring that these areas, they are not degraded or they are not undergoing any kind of problems. So India में there are 18 biosphere reserves, out of which 12 are a part of the MAB network, Man and Biosphere Reserve Network. ठीक है, कौन से उसके पार्ट हैं कौन से नहीं है वो अभी हम देख लेंगे, so don't worry about that. Let's first take a look at the 18 different biosphere reserves of India. Let's start from north. The first biosphere reserve is over here, the Cold Desert Biosphere Reserve. It is in the state of Himachal Pradesh and it extends into the Union Territory of Ladakh as well. The second one is the Nanda Devi Biosphere Reserve. This is Nanda Devi Biosphere Reserve, where lies the Valley of Flowers as well. A very coveted trekking, a very coveted place, tourist place, जहाँ पे बहुत सारी trekking करके जाना पड़ता है. Then here we have the Kanchenjunga or the Kanchenjunga Biosphere Reserve. This is also a national park. Now Kanchenjunga जो है, it is also a part of, this region is also a part of mixed heritage under UNESCO World Heritage Network. United Nations क्या जो यूनेस्को है जिसने MAB प्रोग्राम भी इस्टेब्लिश किया है, it also has a network of world heritages. Now the world heritages, they can be divided into natural, cultural और mixed, जहाँ पे natural importance भी है, cultural importance भी है. This region, it is India's first mixed heritage site under UNESCO's program. After that, we have the Dihang Debang. The Dihang Debang, which is located in Arunachal Pradesh. ये अभी तक जितने भी आप देख रहे हो जो 4 biosphere reserves हैं, all of these biosphere reserves, they are in the Himalayan region. Okay, so we have the Dihang Debang Biosphere Reserves, जहाँ पे आपकी Dihang River, Debang River move करती है. Dihang River, it is Dihang या Siang. It is the name of Brahmaputra when it enters into India.
ओके फिर असम में जब वो जाने लगती है, इट गेट्स वाटर फ्रॉम द देबांग एज वेल एज द लोहित रिवर, एंड दैट्स व्हेन इट्स नाउ कॉल्ड द ब्रह्मपुत्र रिवर एज इट एंटर्स इनटू असम. सो यहाँ पे आपका देहांग देबांग बायोस्फीयर रिजर्व. आफ्टर दिस कम्स द मानस. यहाँ पे नहीं है, मानस यहाँ पे है. दिस इज slightly incorrect. Manas is over here. This is the Manas Biosphere Reserve. जो मानस नेशनल पार्क है वो इसमें इसका पार्ट है. मानस नेशनल पार्क, मानस टाइगर रिजर्व, मानस एलिफेंट रिजर्व, इट इज लोकेटेड ओवर हियर. सो इसकी लोकेशन करेक्ट कर लेना. इट इज नॉट ओवर हियर, इट इज ओवर हियर. Then we have the Dibru-Sakhova Biosphere Reserve, which is located here at the border between Assam and Arunachal. Then here we have another one known as Nokrek Biosphere Reserve. Nokrek National Park है यहाँ पे. Nokrek is the tallest peak of the Garo Hills. Meghalaya में we have the Garo Khasi Jaintia Hills. We have Garo here, then Khasi, then Jaintia Hills. Meghalayan Plateau, the Shillong Plateau, it is a part of the Peninsular Plateau which got separated through the Malda Gap. Right, we have already covered all that in Physiography of India. So here we have the Garo Hill. The tallest peak of Garo Hill is the Nokrek Hill, and this Nokrek is where the Biosphere Reserve, another Biosphere Reserve of India lies. तो यहाँ पे आप देखो जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे 4 Biosphere Reserves, 5 Biosphere Reserve. If we consider Sikkim as a part, we have 7 sisters and brother. 7 sisters are these states. We have 1 brother state, that is Sikkim. So these are 5 Biosphere Reserves are concentrated over here itself. Then let's come to the rest of India. We have the Sundarban Biosphere Reserve over here, where the Sundarban Delta lies. Near to that, we have over here Simlipal. This is Simlipal Biosphere Reserve, which lies in the state of Odisha. In the state of MP, we have the Panna Tiger Reserve से associated जो Biosphere Reserve है, Panna National Park, Panna Tiger Reserve, ये सब है यहाँ पे. We have the Pachmadi Biosphere Reserve. And we have the Achanakmar Amarkantak Biosphere Reserves, which is shared between MP and Chhattisgarh. You must know about the Amarkantak Plateau, which is a radial drainage, जहाँ से radial drainage निकलता है. There is release of Narmada to the west, Son to northeast, and Johila River to southeast. Right? So it shows a radial drainage pattern. Then over here, we have the Kutch region, the marshes, the salt marshes of India, the emergent coastline of India, and यहाँ पे we have the Kutch Biosphere Reserve. After that, let's go to southern parts of India. Here we have Sesachalam in Andhra Pradesh. Andhra Pradesh का पार्ट है Sesachalam Biosphere Reserve. The Nilgiri Biosphere Reserve, Agastyamalai Biosphere Reserve, these are both part of the Western Ghats. This is in Eastern Ghats. Sesachalam Biosphere Reserve is in Eastern Ghat, whereas Nilgiri and Agastyamalai, these are both in Western Ghats. These are distributed. Nilgiri is distributed in 3 states at the tri-junction of 3 states, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. Agastyamalai between 2 states, we have Kerala and Tamil Nadu. After that, the only marine biosphere reserve of India, we have the Gulf of Mannar Biosphere Reserve, which is known for its rich coral, coral presence. यहाँ पे Gulf of Mannar National Park, Gulf of Mannar Wildlife Reserve, ये सब यहाँ पे भी lie करता है. And then one biosphere reserve that is very important right now, very much in news right now, is the Great Nicobar. Now, Great Nicobar is the southernmost island of Andaman and Nicobar Islands. Biggest Nicobarian island भी है ये. And यहाँ पे अभी recently declare किया गया है यहाँ पे Galathea Major Port, ताकि यहाँ पे port activities increase हो सके. Apart from that, Great Nicobar region में Great Nicobar Project, Infrastructure Development Project has also been declared. यहाँ पे है Galathea Bay National Park, और भी national parks हैं, अभी हम देखेंगे. And ये जो Great Nicobar Project है, it is going to affect the core regions, the reserve forests, the core regions of these national parks, and that's why the Great Nicobar Project is very much in news these days. So ये है हमारा Great Nicobar Biosphere Reserve. Fine.
In the next slide, I have given this map in this lateral position ताकि आप और डिटेल में देख सको. यहाँ पे एक बात याद रखना, मानस यहाँ नहीं है. Manas is over here. Just remember that this is a small faux pas that has happened in this map. Chal. Now let's take a look at the key protected areas. Key protected areas in all the biosphere reserves. Reserves हमने देख लिए, उनमें protected areas कौन से हैं, इन पे questions बन सकते हैं कि इस biosphere reserve में which of the following protected areas fall in this biosphere reserve. ठीक है. Now you must be observing some of these rows, they are pink, the rest are colorless. The reason for this is there are 12 biosphere reserves that have been recognized by under the Man and Biosphere program of UNESCO. जो colored हैं they are under the MAB program. जो colored नहीं हैं they are not in the MAB program. Fine. So let's start with the biosphere reserves. The oldest biosphere reserve of India, the Nilgiri. Now Nilgiri में कौन कौन से protected areas हैं? We have Madhumulai, Mukurti, Nagarhole, Bandipur and Silent Valley National Parks, 5 national parks. And we have 3 wildlife sanctuaries, that is Aralam, Wayanad and Satya Mangalam. The second one, we have the Nanda Devi Biosphere Reserve, where मैंने बताया था Valley of Flower lies. So we have Valley of Flowers National Park and of course Nanda Devi National Park. Then we have the Nokrek Biosphere Reserve, जहाँ पे Nokrek National Park lies. This is the highest peak of the Garo Hills. Then we have Gulf of Mannar, the only marine biosphere reserve. यहाँ पे Gulf of Mannar National Park, Gulf of Mannar Wildlife Sanctuary lies. Then we have the Sundarbans, जहाँ पे Sundarban National Park. We have Sajne Khali Wildlife Sanctuary, Lothian and Halide Wildlife Sanctuaries. Then Manas Biosphere Reserve, which does not belong to MAB program. Manas does not belong to MAB program. 12 हैं, 6 नहीं हैं. याद कर लेना वो 6 जो नहीं है, 12 मत याद करना. जो छोटी चीज है वो याद कर लेना, जो इस 6 की लिस्ट में नहीं है मतलब वो है पार्ट ऑफ MAB. राइट. सो बस 6 याद कर लेना कि ये पार्ट नहीं है MAB की. So Manas is one of those which is not the part of MAB program of UNESCO. यहाँ पे it is shared with, this biosphere reserve is shared with Bhutan. Bhutan का Royal Manas National Park belongs to this biosphere reserve. We have Manas National Park, Manas Tiger Reserve, Manas Elephant Reserve and Manas Wildlife Sanctuary. सब Manas. Then we have Great Nicobar. यहाँ पे कैंपबेल बे एंड गैलाथिया बे नेशनल पार्क अप्लाई करते हैं. ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की वजह से दिस बायोस्फीयर रिजर्व इज वेरी मच इन न्यूज. देन वी हैव द सिमलीपाल इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा. यहाँ पे वी हैव द मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, हदगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एंड कुलदिया वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी. After this, we have the Pachmadi Biosphere Reserve, which again is a part of the MAB program. यहाँ पे Satpura, Pachmadi is the highest, the highest धूपगढ़ है, highest point in Satpura. वहाँ पे लाया करता है पचमढ़ी. ठीक है. तो गारो की हाईएस्ट पीक नोकरेक पे भी बायोस्फीयर रिजर्व है. सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक जो है वहां पे भी बायोस्फीयर रिजर्व है. ठीक है. सो वी हैव पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. यहाँ पे सतपुरा नेशनल पार्क, बोरी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एंड पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है. देन कंचनजंगा और कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व. यहाँ पे कंचनजंगा नेशनल पार्क है. दिस रीजन इज इंडियाज फर्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज साइट विच वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. वी हैव दिब्रू साइखोवा, जहाँ पे दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है. दिहांग दिबांग, जहाँ पे मोलिंग नेशनल पार्क और दिबांग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है. Then we have Agasthyamala, southern part of India. यहाँ पे शेंद्रुने, we have Pepara, Nayyar wildlife sanctuaries and we have Kalakar, Mundanthurai tiger reserve. Then Achanakmar, Amarkantak, 2 states के across है. यहाँ पे एक wildlife sanctuary, that is Achanakmar wildlife sanctuary lies. Then we have Great Ran of Kutch Biosphere Reserve. जो saline marshes है इंडिया के, the emergent coast of India. That is where the Run of Kutch or the Great Run of Kutch Biosphere Reserve lies.
यहाँ पे कच्छ डेजर्ट सैंक्चुरी, वाइल्ड एस सैंक्चुरी, वी हैव नारायण सरोवर सैंक्चुरी, Kutch Bustard Sanctuary, and the Banni grasslands. Now, Banni grasslands are very much in news. Why? Because they are being considered as the second location after Kuno, जहां पे हम चीता reintroduction कर सकते हैं. Fine. Now, इनमें से देख लो clearly, दिब्रू साइकोवा, दिहांग दिबांग, दोनों जो अरुणाचल प्रदेश के हैं ना, बायोस्फीयर रिजर्व्स, बोथ आर नॉट अ पार्ट ऑफ एमएबी प्रोग्राम. सो नॉर्थ ईस्ट में जितने भी हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनमें से 3, मानस, दिब्रू सैखोवा, दिहांग दिबांग, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द एमएबी प्रोग्राम. देन जो रन ऑफ कच्छ का बायोस्फीयर रिजर्व है गुजरात वाला, वो भी नहीं है. तो जब सबसे जो ईस्ट और सबसे जो वेस्ट हमारे स्टेट्स हैं, गुजरात का बायोस्फीयर रिजर्व एंड अरुणाचल के 2 बायोस्फीयर रिजर्व्स, all of them are not a part of MAB program. Fine. Then we have the Cold Desert Biosphere Reserve, which again is not a part of the MAB program. It is spread across Himachal Pradesh and Ladakh. It includes Pin Valley National Park, Chandratal, Sarchu, and Kibber Wildlife Sanctuaries. Then we have Seshachalam, which again is not a part of MAB program. So Eastern Ghat का भी जो है बायोस्फीयर रिजर्व, दैट इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ एमएबी प्रोग्राम. तो कौन कौन से हो गए जो नहीं है पार्ट एमएबी प्रोग्राम के अभी तक? मानस नहीं था, ठीक है. उसके बाद अरुणाचल और गुजरात, वी हैव दिब्रू सैखोवा, दिहांग दिबांग, गुजरात, कच्छ एंड द कोल्ड डेजर्ट. ठीक है. जो नदर्न मोस्ट हमारा है वो भी पार्ट नहीं है ऑफ एमएबी प्रोग्राम. तो नॉर्थ, नदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, तीनों जो हैं वो पार्ट नहीं है ऑफ द एमएबी प्रोग्राम. देन वी हैव शेषाचलम. शेषाचलम जो ईस्टर्न घाट्स की है, ईस्टर्न घाट्स का जो इकलौता है बायोस्फीयर रिजर्व, that is also not a part of MAB program. So यहाँ पे श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है. Then we have the Panna Biosphere Reserve. This is the newest edition. ये अभी बिल्कुल recently add किया गया है in the MAB program. Newest addition to MAB program is Panna. Oldest addition to MAB program was Nilgiri. ठीक है, Nilgiri was the oldest. Panna is the newest. It includes Panna Tiger Reserve, Panna National Park, and Gangao Wildlife Sanctuary. Okay, so these are the different biosphere reserves of India. कौन से नहीं है included? If this is India, यहाँ का जो है the easternmost, the Kutch one not included, cold desert not included. यहाँ पे दिहांग दिबांग नहीं included है, इसी के पास है दिब्रू सैखोवा. यहाँ पे है मानस. सो ये नॉर्थ में हो गए. साउथ में एक इंक्लूडेड नहीं है जो हमारा ईस्टर्न घाट्स का है, दैट इज शेषाचलम. ठीक है, बाकी ऑल आर इंक्लूडेड अंडर द एमएबी प्रोग्राम एक्सेप्ट दीज 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. All the others are included in the MAB program of UNESCO. Okay, so that's it for this particular session. Thank you so much, all of you.